Towards the end of March, the U.S. hosted the Second Democracy Summit. The stated objective was to put democracy and human rights at the heart of the Biden administration's foreign policy. The first summit held in 2021 had focused on countering authoritarianism, fighting corruption, and promoting human rights, while the 2023 summit has discussed how democracy could deliver economic growth, inclusivity, and media freedom. This U.S.-led event focused on promoting freedom in the digital era and countering the misuse of technologies. There was, however, an aspect that was notably not discussed but was certainly a part of the equation. Not inviting China, and inviting instead Taiwan, for instance, was a signal that the U.S.-China competition has assumed a strong ideological dimension. The U.S. regards the Chinese government as an authoritarian regime that has joined hands with another autocratic government, that of Vladimir Putin in Russia. The summit appears to be a lobbying effort for the liberal democracy model that the West espouses. China's governance experience has shown an alternative effective route to development, and is getting traction amongst the developing world. At a time when the world is on the cusp of a new Cold War, the Democracy Summit process is seeking to consolidate the voice of countries practicing liberal democracy. The agenda of the conference reveals another story. The co-host event, chaired by the U.S., makes a strong case for the ecosystem of emerging technologies to be underpinned by democratic principles and a fight against digital authoritarianism. The U.S., which has been a leader in high-tech innovations, appears to be feeling threatened by the pace of China's technological advancement. Huawei faced export controls by the U.S. Commerce Department over concerns that sensitive data could potentially reach China. In January 2021, American firms were barred from transacting with select Chinese apps. More recently, we saw the CEO of a China-based social media platform, TikTok, being questioned by a U.S. Congress committee over concerns that the app could potentially share data with the Communist Party of China. The summit declaration, which has 17 action points, has been endorsed by 73 countries. Among the prominent names absent from the list are Turkey, Brazil, Malaysia, Indonesia, and Egypt. Pakistan's reason for not taking part seems to have been the China factor. Pakistan was invited to the summit, but it politely declined. The government clarified that our non-participation did not mean that we were against the concept of democracy, nor was it meant to be any signal to the U.S. The main rationale for Pakistan's decision appears to be the China factor. Taiwan, which is an active participant of the summit process, is regarded by us as a part of China in line with the One China policy that we follow. There is a view that Pakistan should have participated in the summit, particularly at a time when we need the support of the U.S. and its influence in the IMF to resolve our economic woes. The counter-argument, however, is that if Pakistan had participated, it would have been seen as distancing itself from China and joining a forum which is clearly espousing an anti-China pitch. Pakistan cannot afford to disrupt its relations with China, which has stood by Pakistan all these years. In the evolving global politics, Pakistan has opted to follow a policy of not taking sides in the U.S. competition with China and Russia. If there is an initiative that is aimed at the common prosperity of the world, Pakistan should join it, regardless of whether it is led by the U.S., China, or any other major power. Conversely, if an initiative appears to be part of one coalition or the other, Pakistan must exercise discretion. On 3 occasions in the past, Pakistan had fully sided with one major power, and we suffered its long-term implications for decades. This time round, Pakistan seems determined not to take sides. An argument is often made that a time will come when the U.S. and China would expect Pakistan to choose a side. Pakistan, even under such circumstances, should maintain its relations with either power based on its national interests. If we remain steadfast in this approach, no nation can force us to choose sides. Robert Hathaway's study The Leverage Paradox concluded that the ability of the U.S. to exert its influence over a target country which receives American assistance is directly proportional to the willingness of that country to be leveraged.
Let us stay firm in our conviction that Pakistan must maintain its strategic autonomy in choosing a foreign policy that pivots around its own national interests. Of course, that requires us to first put our house in order so that we can take our decisions in our own interest and are not pushed around. The writer is a former foreign secretary and author of Diplomatic Footprints. Published in Dawn, April 4, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. मार्च के आखिर में अमेरिका ने दूसरी डेमोक्रेसी समिट की मेजबानी की। बयान करदा मकसद जमहूरियत और इंसानी हुकूक को बाइडेन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी के मरकज में रखना था। 2021 में होने वाले पहले सरबराही इजलास में आमिरियत का मुकाबला करने, बदउनवानी के खिलाफ जंग और इंसानी हुकूक को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई थी, जबकि 2023 के सरबराही इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया था कि जमहूरियत किस तरह माशी तरक्की, शमूलियत और मीडिया की आज़ादी फराहम कर सकती है। अमेरिका की क़ियादत में होने वाली इस तकरीब में डिजिटल दौर में आज़ादी को फ़रोग़ देने और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का मुकाबला करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ताहम, एक पहलू था जिस पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल नहीं किया गया था, लेकिन यकीनी तौर पर मसावात का एक हिस्सा था। मिसाल के तौर पर चीन को मदऊ न करना और उसके बजाय ताइवान को मदऊ करना इस बात का इशारा था कि अमेरिका और चीन के दरमियान मुसाबकत ने एक मजबूत नज़रियाती जिहत इख्तियार कर ली है। अमेरिका चीनी हुकूमत को एक मुतलक अलनान हुकूमत के तौर पर देखता है, जिसने रूस में व्लादिमीर पुतिन की एक और आमिराना हुकूमत के साथ हाथ मिलाया है। ऐसा लगता है कि यह सरबराही इजलास लिबरल डेमोक्रेसी मॉडल के लिए लॉबिंग की एक कोशिश है, जिसकी मगरिब हिमायत करता है। चीन के गवर्नेंस के तजुर्बे ने तरक्की के लिए एक मुतबादिल मुअस्सिर रास्ता दिखाया है और तरक्की पजीर दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया एक नई सर्द जंग के दहाने पर है, डेमोक्रेसी समिट का अमल लिबरल जमहूरियत पर अमल करने वाले ममालिक की आवाज़ को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से एक और कहानी सामने आती है। अमेरिका की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के इकोसिस्टम को जमहूरी उसूलों और डिजिटल आमिरियत के खिलाफ लड़ाई पर जोर दिया गया है। अमेरिका, जो हाई टेक जिद्दत तराजी में रहनुमा रहा है, चीन की तकनीकी तरक्की की रफ्तार से खतरा महसूस करता दिखाई देता है। हवावे को अमरीकी महकमा तिजारत की जानिब से बरामदी कंट्रोल का सामना करना पड़ा क्योंकि खदशा था कि हसास डेटा मुमकिना तौर पर चीन तक पहुंच सकता है। जनवरी 2021 में अमरीकी कंपनियों को मुंतखब चीनी ऐप्स के साथ लेन देन करने से रोक दिया गया था। हाल ही में हमने देखा कि चीन में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के सीईओ से अमरीकी कांग्रेस की एक कमेटी ने उन खदशात पर पूछ-गुछ की कि ऐप मुमकिना तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ डेटा शेयर कर सकती है। समिट एलामिया, जिसमें 17 एक्शन पॉइंट्स हैं, की 73 ममालिक ने तौसीक की है। फहरिस्त से गैर हाजिर नामों में तुर्की, ब्राज़ील, मलाइशिया, इंडोनेशिया और मिस्र शामिल हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से हिस्सा न लेने की वजह चीन का अंसर है। पाकिस्तान को समिट में मदऊ किया गया था, लेकिन इसने आजिज़ी से इनकार कर दिया। हुकूमत ने वाज़े किया कि हमारी अदम शिरकत का मतलब ये नहीं है कि हम जमहूरियत के तसव्वुर के खिलाफ हैं और न ही इसका मकसद अमेरिका के लिए कोई इशारा है। पाकिस्तान के इस फैसले की बुनियादी वजह चीन का अंसर मालूम होता है। ताइवान, जो सरबराही इजलास के अमल का एक फाल हिस्सादार है, को हम एक चीन की पॉलिसी के मुताबिक चीन का हिस्सा समझते हैं जिस पर हम अमल करते हैं। एक राय यह है कि पाकिस्तान को समिट में शिरकत करनी चाहिए थी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हमें अपनी माशी मुश्किलात को हल करने के लिए अमेरिका की हिमायत और IMF में इसके असर और रसूख की ज़रूरत है। ताहम जवाबी दलील ये है कि अगर पाकिस्तान ने शिरकत की होती तो उसे चीन से दूरी इख्तियार करने और एक ऐसे फोरम में शामिल होने के तौर पर देखा जाता जो वाज़े तौर पर चीन मुखालिफ है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात में खलल डालने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो उन तमाम सालों में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। बदलती हुई आलमी सियासत में पाकिस्तान ने चीन और रूस के साथ अमरीकी मुकाबले में किसी का साथ न देने की पॉलिसी इख्तियार की है।
अगर कोई ऐसा अक़दाम है जिसका मकसद दुनिया की मुश्तरका खुशहाली है तो पाकिस्तान को इसमें शामिल होना चाहिए, कत नज़र इसके कि इसकी क़ियादत अमेरिका, चीन या कोई और बड़ी ताकत कर रही है। इसके बरक्स, अगर कोई अक़दाम किसी न किसी इत्तेहाद का हिस्सा मालूम होता है तो पाकिस्तान को सवाबदीद का इस्तेमाल करना होगा। माजी में 3 मौक़े पर पाकिस्तान ने एक बड़ी ताकत का मुकम्मल साथ दिया था और हम कई दहाइयों तक इसके तवील मुद्दती मुज़मरात का सामना करते रहे। ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान किसी की तरफदारी न करने के लिए पुरज़्म है। अक्सर ये दलील दी जाती है कि एक वक्त आएगा जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान से किसी फरीक का इंतखाब करने की तवक्को करेंगे। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान को अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किसी भी ताकत के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखने चाहिए। अगर हम इस नुक्ता नज़र पर साबित कदम रहें तो कोई भी कौम हमें फरीक मुंतखब करने पर मजबूर नहीं कर सकती। रॉबर्ट हीथवे के मुताले दी ल्यूरिज पैराडॉक्स ने यह नतीजा अखज़ किया है कि अमरीकी इमदाद हासिल करने वाले किसी हदफ मुल्क पर अपना असर और रसूख बढ़ाने की अमरीका की सलाहियत बराह रास्त इस मुल्क की इस ख्वाहिश के मुतनासिब है कि वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है। आइए हम अपने इस यकीन पर कायम रहें कि पाकिस्तान को अपनी तज़वीराती खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए एक ऐसी खारजा पॉलिसी का इंतखाब करना चाहिए जो इसके अपने कौमी मफादात के गिर्द घूमती हो। यकीनन इसके लिए हमें पहले अपने घर को तरतीब देने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मुफाद में अपने फैसले ले सकें और हमें पीछे न धकेला जाए। मज़मून निगार साबिक़ सेक्रेटरी खारजा और डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स के मुसन्निफ़ हैं। अखज़ शदा बतारीख़ 4 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.